हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग तीसरे तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इट इज मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हाउ दिस मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन डज वर्क, क्या क्या वो पार्ट है जो हम लोग मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद ग्राफ लाइक y इक्वल्स टू mod f x, y equals to mod of f of mod x, and third type where mod of y equals to f of x will be discussed. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जब एफ एक्स के ऊपर मोड लगा हो तो करना क्या है। बेसिकली से समझने के लिए जस्ट हैव अ लुक ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x। यू नो हाउ y इक्वल्स टू x डज लुक लाइक। नाउ x की उन वैल्यूज पे फोकस करें जहां पे नेगेटिव इनपुट्स के लिए यू आर गेटिंग नेगेटिव आउटपुट्स। बट अगर आपने y के ऊपर अगर आपने x के ऊपर लगा दिया है मोड, देन व्हाट विल हैपन, x नेगेटिव तो अब आप रख पाएंगे, लेकिन उन x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए you will get a positive response. Suppose of for x is equals to -1, if you used to get -1 as the output, but now what will happen at x is equals to -1 you will get 1. So flipping of the graph will take place जहाँ पे lower part को हमें shift करना है upper part में. So consider if this is the graph of y equals to fx, if this is the graph of y equals to fx, then how you can draw graph of mod of fx? For that one, let me just flip the graph which is lying below the x-axis, and let me complete this graph. So this is how graph of your mod fx will look like, correct? So now let me flip this remaining curve. There you go. This is your, that red one represent the graph of mod fx. All right, now let me take a couple of questions to understand this theory in detail. Suppose if we need to draw graph of y equals to mod ln x, then what will happen? As I told you earlier, कि जिन x की values के लिए you are getting negative outputs, और negative outputs की जगह you still get a positive one. So just need to flip the graph which is lying below the x-axis in upper region. So that graph in black will represent your graph of mod ln x. Am I right? Now let me take another one. If you feel uncomfortable how to draw graph of a quadratic expression, then for a now only remember, whenever a quadratic expression is given to us, a parabolic shape is how your quadratic will look like. Now it totally depend on what leading multiplier will be. What do I mean by leading multiplier? अगर x square का coefficient positive है, then it will look like mouth opening upward, इसकी direction होगी. But if a is lesser than 0, then mouth opening downward, the graph will become parabolic curve जिसका mouth opening downward will be the shape. Right here x square minus 4x plus 3, it look like ये factorizable है जिसके फैक्टर होंगे 1 और 3. इसका मतलब है ग्राफ 1,3 को पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. If this is the graph of x square minus 4x plus 3, हमें करना क्या है, मॉड के लिए वो पार्ट जो x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, केवल उस पार्ट को हमें क्या करना है, फ्लिप करना है. फ्लिपिंग दैट ग्राफ एंड लेट मी कंप्लीट its remaining part. So there we go. This is what your graph of mod of x square minus 4x plus 3 will look like. Let me move to the next one. There where we have a mod on y instead of on f of x. So just tell me a thing. अगर आपको कभी expression दिखेगा कुछ ऐसा mod of y equals to 1, is it acceptable for all of you? नहीं, ये acceptable नहीं है. But if I'll get mod of y equals to 1, then what will happen? In that case, y will attract two different values. One, it is y equals to 1, and another one, it is y equals to -1. So based on these two examples, what you supposed to do, you have to delete the graph which is lying below the x-axis, because वो possible नहीं होगा mod y के लिए negative values देना. तो जैसे ही मान लेते हैं कि sin x, if it is your f of x, then what you supposed to do, इस ग्राफ को आप डिलीट कर दें. इसे डिलीट करने के बाद जो आपको रिमेनिंग ग्राफ दिख रहा है, तो दूसरे पॉइंट mod y इक्वल्स टू 1 का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आपको दो अलग अलग y मिलेंगे फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यूज, यानी mod y इक्वल्स टू 1 दो अलग अलग y को इन्वॉल्व करेगा.
That means you need to take reflection of the graph with respect to x axis. रिमेनिंग ग्राफ का आपने क्या करना है, आपने x axis में रिफ्लेक्शन लेना है. Let me complete this graph now. So this is how your graph of mod y equals to sin x will look like. Let me take an example. Say this time we need to draw the graph of mod y equals to x plus 1 times x minus 3. So first prerequisite to draw the graph of this quadratic expression, which will give you 0 at x is equals to minus 1 and 3. Suppose कि ये ग्राफ आपको given है या somehow आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है. इसके हेल्प से भी ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, mod y equals to x plus 1 times x minus 3. एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि mod y cannot be equals to a negative value. So negative values यानी कि वो पार्ट जो x एक्सिस के बिलो है उसे सबसे पहले डिलीट कर देना है जी, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, वो पार्ट जो कि x एक्सिस के अबव लाई कर रहा है, वो पार्ट जो कि x एक्सिस के अबव लाई कर रहा है उसी का आपको लेना है रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस. यानी कि दिस इज हाउ योर ग्राफ विल लुक लाइक, समथिंग लाइक दिस. So let me complete this graph. So that will be known as the graph of mod y equals to x plus 1 into x minus 3. Now the third and the most one, if we need to draw graph of y equals to f of mod x, आप क्या कर सकते हैं, you may do two things. First of all you may define the mod define करेंगे कैसे, around the x. कैसे, if x is greater than 0 then you simply need to draw the graph of fx which you already know. So draw the graph of f of x for x greater than 0 only, and when x will take values lesser than 0, graph of f of x will be f of minus x, जो कि हम last class में study कर चुके हैं. Just take the reflection of the graph along y axis only. समझ आया हमें करना क्या है. मान लेते कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू साइन मोड x का, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो साइन x का ग्राफ वही होगा जो कि वो होता है. wherever for x लेस देन 0 के लिए साइन x का ग्राफ क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमने साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया था उसका y एक्सिस में मिरर इमेज, उसका y एक्सिस में मिरर इमेज. सो जस्ट लेट मी टेक द मिरर इमेज ऑफ graph of sin x for x greater than 0. So there we go. This is how your graph of sin mod x look like. Correct. Now let us say more than one mod function is involved. This time we need to draw the graph of log mod x whole mod. So one thing is that आप कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. if you feel comfortable कि मुझे पहले log mod x का ग्राफ करना है, then do that thing. लॉग मॉड एक्स के ग्राफ के लिए आपको करना क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि ऑलरेडी आपने किया हुआ है. नाउ जस्ट टेक अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ फॉर x लेसर देन 0. देयर वी गो. सो दिस इज नोन एज द ग्राफ ऑफ लॉग मॉड x. अभी करना क्या है, इस पूरे ग्राफ का भी हमें मोड लेना है. पूरे ग्राफ का मोड का मतलब जो भी x लेसर देन 0 के लिए फंक्शन का ग्राफ रहा होगा, आपको केवल उस ग्राफ को फ्लिप करना होगा फॉर अपर पार्ट और फॉर x फॉर y greater than 0. So there we go. This is how your graph of log of mod x look like. Isn't it easy? Let me take one more. This time we need to draw graph of y equals to mod of 1 minus mod x. करेक्ट. तो ग्राफ का वो पोर्शन आप सेलेक्ट करें, वो पार्ट आप सेलेक्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल फील होते हैं. if I were you then I would choose mod x. mod x का ग्राफ आसान है, it's very easier to pick or draw. So this is how your graph of mod of x will look like. Am I right? उसके बाद अगर मुझे माइनस mod x का ग्राफ करना है, so with the help of this transformation minus of f of x, करना क्या होता है इस वाले ग्राफ में आपने रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, आपको फ्लिप करना पड़ता है इस ग्राफ को इन एक्स एक्सिस. तो दैट ग्राफ इन ब्लू रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ माइनस मॉड एक्स. करेक्ट. तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ अभी तक हम लोगों को मिल गया है. इसके बाद हमें करना क्या है, हमें वन ऐड करना है. इफ यू आर एडिंग समथिंग देन व्हाट विल हैपन, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ विल टेक प्लेस, इजंट इट.
तो अगर आपको ग्राफ शिफ्ट करना है तो ये ग्राफ शिफ्ट कहाँ होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. If you are adding some positive value, then obviously shifting will take place in upward direction only. I'm sure you understand that concept too. So this will be the graph of y equals to 1 minus mod x. जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े हैं वो सभी हम एक साथ यहाँ अप्लाई करने वाले हैं. Now in the third step what is happening, पूरे ही ग्राफ के ऊपर मोड है, यानी कि in third one you are supposed to draw or use the steps of transformation for mod of f of x. Mod of f of x में what do we do, वो ग्राफ जो कि below the x axis है उसे हम लोग डिलीट कर देंगे. Am I right? और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ को हम कर लेंगे शिफ्ट. तो अगर मोड लगा हो किसी ग्राफ के अंदर, लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड अगेन, देन व्हाट डू वी डू, हम लोग फ्लिप करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ को टू अपर पार्ट ओनली. तो लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ को अगर अपर पार्ट हमें शिफ्ट करना है, सो दिस इज हाउ योर ग्राफ ऑफ mod of 1 minus mod x look like. There we go. Let me complete this graph. So this is the graph of your desired function. I'm sure this lecture was very it was beneficial to all of you. In the next class, we'll be discussing some more challenging questions based on mode transformation. So thank you very much, you all.